This is the third part of the chapter, same chapter, animal. Now continuing with this same chapter, that is the animal kingdom. The next phylum is Annelida, और उसमें क्या आता है? Earthworm, leeches and aquatic annelid, that is Nereis. So these annelids can be aquatic, that means marine or living in fresh water, or terrestrial. They can be free living and sometimes parasitic, like you have that leech which is an ectoparasite. अब organ system levels of organization, it has bilateral symmetry और ये triploblastic है, but these are metamerically segmented animals. That means their body is divided into equal segments, externally as well as internally. और क्या है? Coelomate animals, that means a true coelom is present. इसमें we said just now body is divided into equal segments. उन segments को क्या बोलते हैं? Metameres. और इसी के लिए this phylum is called as Annelida. Latin में annulus means little ring. They possess longitudinal and circular muscles. In case of nematohelminthes, जिसमें nematodes थे, उनमें क्या था? खाली longitudinal muscles. अब इसमें जैसे हम में भी है कि दोनों longitudinal as well as circular muscles, and this is going to help them in locomotion. Now aquatic annelids, जैसे कि Nereis है, they have lateral appendage. Side के body में the appendages हैं which are called as parapodia, and they help in swimming. And also थोड़ा बहुत respiration भी होता है, because these are highly vascularized, they have blood vessels in it. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत exchange of gases भी होता है. अब रहा terrestrial annelids, उनमें setae होते हैं, वो S-shaped chitinous bristles होते हैं. That means they are made up of chitin or present है on the body, and with the help of setae the annelid gets attached to the surface, to the substratum, और उसके साथ attach करके the coelomic fluid is pushed forward, and that is going to help in locomotion. अब इसमें closed circulatory system है. नहीं तो इन्वर्टेब्रेट्स में हम ज़्यादातर देखते हैं, आर्थ्रोपोड्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मोलस्क में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट इसमें क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट इज द हीमोग्लोबिन, दैट इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड. हम में कहाँ पे है? आरबीसी में, और यहाँ पे इट इज डायरेक्टली डिजॉल्व्ड इन ब्लड, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. नेफ्रीडिया जो है helps in osmoregulation and excretion. और जो न्यूरल सिस्टम है, एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और उस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में गैंग्लिया है, स्वेलिंग से जहाँ पे सेल बॉडीज होती हैं ऑफ द नर्व फाइबर्स, और फ्रॉम दिस गैंग्लिया पेयर्ड है, दैट मीन्स दोनों साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड, ईच सेगमेंट में एक साइड से एक गैंग्लियन है, दूसरे साइड से दूसरा गैंग्लियन है, and is ganglia will be connected by lateral nerves. And Nereis will find is unisexual, meaning that sexes are separate. लेकिन जो earthworm और leeches हैं, they are hermaphrodite, that means both the sex organs are present in the same individual. Reproduction sexual है. Nereis is an example of a marine annelid. Pheretima is an earthworm, and Hirudinaria is a leech. It's an ectoparasite, and they suck blood from the vertebrates, and when they suck blood they secrete out is a anticoagulant, that is hirudin, that prevents clotting of blood. So these are the two examples that are given in your NCERT book. One is of the Nereis. अभी हमने बोला कि Nereis में marine annelid है और lateral appendages है. So these are the lateral appendages that help in locomotion, that help in swimming in the water, in the sea water, and these lateral appendages are called as parapodia. और ये इसमें blood vessels भी हैं, तो थोड़ा बहुत exchange of gases भी होता है on these parapodia.
This is a hereditaria that you know sucks blood, and for that it has two suckers, one here and one at the oral end. एक attachment के लिए है, एक for sucking of the blood के लिए. Now coming to the next phylum, that is arthropoda. This is the largest phylum of the Animalia, और इसमें diverse groups है, like insects है, prawns है, spiders है, scorpions है. तो about 2/3 of all named species on earth are arthropods. They again have organ system level of organization, bilaterally symmetrical है, triploblastic है, segmented है, and they are coelomate animals. अब यूनिक फीचर्स क्या है इस ग्रुप के कि बॉडी इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन. सो ऊपर एक स्केलेटन होगा, किसका बना? काइटिन का. एंड वी सेड अर्लियर ऑल्सो, जब हम सेगमेंटेशन करते थे कि बॉडी किया था हमने कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. नाउ इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस है. सो तभी उसी से नाम पड़ा है. आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेज. दैट्स व्हाई दिस phylum has got the name of arthropoda. Now since diverse group है, सबसे largest group है, तो थोड़ा diversity है इनके respiratory organs में. तो respiratory organs can be gills, जैसे कि prawn है. It can be in the form of book gills. तो book gills कैसे है? Why the book? क्योंकि जो gills हैं वो plate जैसे हैं, like thin pages of a book, उसकी तरह है, और on one top of the other. और ये जो है book gills जो है external होंगे. So they will help in exchange of gases in water. And they are present in limulus, that is king crab, horseshoe crab, and this is considered as a living fossil. मतलब बहुत पहले से अभी तक survive कर रहे हैं, so that is called as a living fossil. दूसरा respiratory organ can be book lungs. So this book lungs भी है, plate like membranes हैं, just like a pages of a book, लेकिन ये internal होंगे और present होंगे in a air filled cavity. So they are used for atmospheric gas exchange. जैसे कि कुछ arachnids में है, like you have scorpions, spiders, जिसमें book lungs होंगे, or the tracheal system that is present in insects, जहाँ पे एक network of tube directly from the outside will be going into the tissues. So now coming to the circulatory system. Circulatory system is the open type. Annelid, I said, is the example, only example where there is a closed circulatory system in case of the invertebrates. So insects में hemolymph present है, because air is going directly into the cells, into the tissues, so they don't need a respiratory pigment to transport the gases. लेकिन बाकी में copper containing respiratory pigment है, that is called as hemocyanin, dissolved in the hemolymph. और ये hemocyanin is क्या है? मतलब when the blood is deoxygenated, copper containing है, attached to the protein, जैसे hemoglobin में क्या है? Iron containing, attached to the protein, यहाँ पे copper will be attached to the protein. And when the blood is deoxygenated, तो वो colorless होता है. And when the blood becomes oxygenated, it will turn blue in color. And it's present in many crustaceans, some arachnids and limulus. Arachnids ये हो गए, scorpions, spiders, and limulus will be the king crab, which is a living fossil. Now sensory organs are antenna, like you must have seen, like जैसे cockroach, और इसमें eyes हैं, या तो simple होंगे नहीं तो compound होंगे. Statocyst है, और balance organs कहाँ पे present होते हैं? At the base of the antennule. और ये crustaceans को help करता है to reorient themselves in respect to gravity.
अब फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, ओविपेरस है, दैट दे ले एग्स, एंड डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. So in your NCERT book they have listed the examples of this under these headings. एक है economically important insects, apis, that is the honeybee, there should be Y here, honeybee, bombyx, that is the silkworm for production of silk, and lacifer, that is a lac insect जिसे वो lac bangles भी बनाते हैं. Then next group they have as vectors. So vectors, Anopheles, that you know, female Anopheles carries the malarial parasite, is a vector for malarial parasite. Culex is a vector for JE, that is Japanese encephalitis. Aedes for dengue fever. Then you have gregarious pests. Gregarious pest में एक example है in your NCERT book, that is locusta, locust. Or locust comes in large numbers, and in the just within half an hour, within a few can destroy large paddy fields, and they cause destruction on a large scale. So it's very difficult to eradicate them once they set on the path of destruction. Then next example, that is living fossils, that is the limulus. As I said, living fossils, that means they have survived, they have originated on the earth long time back and is still surviving till now. So that is called as a living fossils, and that is limulus, horseshoe crab, or the king crab. So these are some examples listed in NCERT book. This is a locust, which I said causes mass destruction of crops on a large scale. This is the butterfly, helps in pollination, scorpion, and this is the prawn living in water. Coming to the next group, that is mollusca. Mollusca में क्या आते हैं? Snails हैं, octopus हैं, squids हैं. So this is the second largest animal phylum. These are terrestrial, aquatic, having an organ system of organization. Bilaterally symmetrical है, triploblastic है, and coelomate animals. Now coming to their unique features or distinctive features, कि इसमें unsegmented body है. अभी तक हमने देखा था कि annelida is segmented, arthropoda is segmented, but this has unsegmented and the body is soft. Body हम देखेंगे, जैसे अगर snail ले लो, it has a shell on top. It is covered by a shell, and this is made up of calcium carbonate. So it is called as calcareous shells. और ये shell कहाँ से form होता है? एक mantle से. एक covering है over the visceral organs, that is called as mantle. और ये shell बाहर हो सकती है, ये shell भीतर हो सकती है internal, or it can be absent like in octopus. Body you'll find will be divided into head, ventral muscular foot, that means head, foot, and a visceral hump. जैसे camel में एक hump है, वैसे भी यहाँ सा एक elevated portion है, that is called as a hump. और इस चूंकि इस hump में सारे internal organs हैं, that's why it is called as visceral hump. और इस visceral hump पे जहाँ पे सारे internal organs है, एक soft spongy layer of skin है, that is called as the mantle. So a soft and spongy layer of skin over the visceral hump is called as the mantle. और यही mantle अभी हमने क्या बोला था, क्या secrete करेगा? The shell, the calcareous shell. Calcareous, that is made up of calcium carbonate. Now ये basic body plan हमने एक mollusca दिखाया है कि यहाँ पे head होगा. We said the body is divided into head, और ये देखो raised portion है ना, ये सारा. So this is what we called as a visceral hump, और एक ventral foot. So this entire is for ventral foot used for locomotion. And we said कि visceral hump के ऊपर एक spongy layer of soft tissue है, and this is the spongy layer of soft tissue that is called as the mantle. अब इस mantle और visceral hump के बीच में एक space है, that is called as mantle cavity.
और इस mantle cavity में can you see this feather like structure there? This is the gill or ctenidium as it is called. तो यहाँ पे और एक और यूनिक फीचर इसमें जो है कि यहाँ पे बकल कैविटी में एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज रेडुला फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. तो ये अनदर यूनिक फीचर है इस मोलस्क में. नाउ जस्ट नाउ वी सेड कि जो स्पेस है विसरल हम्प और मैंटल के बीच में उसको क्या बोलते हैं? मैंटल कैविटी. और इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज टिनीडियम. और इस गिल्स को क्या है? एक्सक्रीटरी एज वेल एज रेस्पिरेटरी फंक्शंस. इंटीरियर हेड पे सेंसरी टेंटिकल्स है. माउथ दैट मीन्स द बकल कैविटी में एक रैस्पिंग ऑर्गन है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर है और उसको क्या बोलते हैं? रेडुला. और जनरली ये क्या है? डायशियस दैट इज यूनिसेक्सुअल. ओविपेरस है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. सो कमिंग टू द एग्जाम्पल यू हैव स्पाइला दैट इज द एप्पल स्नेल, कॉमनली मिलता है, यू मस्ट हैव सीन इन. पिंक्टिडा दैट इज अ पर्ल ऑयस्टर. तो पर्ल ऑयस्टर में बाइवाल्व्स हैं, 2 शेल्स हैं और वो फॉर्म करते हैं पर्ल्स. पर्ल्स क्या है? अपने दे प्रोटेक्ट देमसेल्स कि कभी भी सैंड पार्टिकल अगर घुसेगा भीतर में इन द मैंटल कैविटी, सो दे सिक्रीट अ सिक्रीशन अराउंड इट एंड दैट वी हार्वेस्ट in the form of pearls. So हम what is done that these pearl oysters are taken out, इनका कल्चर करते हैं और एक सैंड पार्टिकल, एक इरिटेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट डालते हैं उनके मैंटल के ऊपर and they are sent back. So they form this pearl as protect themselves from that sand particle or foreign object, and they secrete these secretions around it which we harvest as pearls. Sepia, cuttlefish, loligo, squid, octopus, you have seen, devilfish, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटलम, टस्क शेल. शेल इनका बिल्कुल एक एलिफेंट की टस्क के तरह है. एंड कीटोप्लूरा दैट इज द काइटिन. बाइवाल्व्स हैं. अब जो ये स्क्विड्स है, ऑक्टोपस है और कटलफिश है, these are grouped in a class that we call as cephalopods. They are very intelligent और इनमें क्या है कि एक इंक सैक है at the hind gut, पीछे से की ओर, और ये एक्सपेल करता है क्लाउड ऑफ डार्क इंक. सो वेन एवर दे फील थ्रेटन्ड बाय अ प्रीडेटर तो दे इजेक्ट दिस इंक इनटू द सराउंडिंग वाटर. तो सराउंडिंग वाटर क्या बनेगा? डार्क एंड क्लाउडी. सो द प्रीडेटर कांट सी and they run away in order to confuse the predator and escape from the predator. So these are the two examples given. ये तो shell है of a phyla and it has an internal organ, external shell है. ये octopus है, arms है with oral suckers in it called as the devilfish, and in this the shell is absent. Coming to the next group, that is phylum Echinodermata. तो इसमें सी फिशेस आते हैं, सी अर्चिन्स आते हैं, सी क्यूकम्बर आते हैं, सी लिली आते हैं, एक्सेट्रा. सो ऑल इन ऑल दिस ग्रुप्स ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अडल्ट में मगर क्या है? सिमेट्री रेडियल, लाइक यू हैड इट इन सीलेंट्रेटा, यू हैड इट इन टिनोफोरा. लेकिन जो लार्वा है, लार्वल स्टेज जो है, दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स है. अब कमिंग टू द यूनिक फीचर्स, अब दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स. हुआ डर्मिस में, एंडो मीन्स थोड़ा भीतर में, तो डर्मिस में कैल्शियम कार्बोनेट्स के प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज द ऑसिकल्स. दैट इज वाई दे हैव गॉट द नेम एज इकाइनो. इकाइनस मीन्स स्पाइनी बॉडीड डर्मेटा. डर्मस में स्पाइन्स हैं, these ossicles, and that is why they got the name as Echinodermata. Digestive system complete है, लेकिन माउथ कहाँ पे है? वेंट्रल है ओरल साइड पे, और एनस वेरी ऑफन इट इज एब्सेंट ऑन द डॉर्सल एबोरल साइड. अब इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम. दैट मीन्स एक कनाल्स हैं, जैसे स्टारफिश में ले लो तो 5 आर्म्स में 5 कनाल्स रेडिएट करेंगे
open to outside by the madreporoid and इस canals के साथ क्या attached है, tube feet. So ये help करता है किसमें, locomotion में, capture and transport of food and respiration, क्योंकि through this water will be circulating. There is no well-defined excretory system. It occurs through the general body surface. Sexes you will find will be separate. Sexual reproduction is there only. Fertilization is external and development is indirect. Examples like you have Asterias, that is the starfish, Echinus, the sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumaria, sea cucumber, body cucumber की तरह है, Ophiuria, that is the brittle star. So this is Asterias, that is the starfish, and this is the brittle star. Now coming to the last group of invertebrates, that is phylum Hemichordata. Hemichordata में पहले इसको ग्रुप किया था chordates के साथ, क्योंकि इसमें एक buccal diverticulum है और वो they thought that buccal diverticulum जो है इसमें एक rod shaped structure है in the interior end है, वो एक notochord है, which is notochord is a feature, one of the diagnostic features in case of the chordates, one of the main features in case of chordates, जिससे distinguish होता है a chordate from a non-chordate. But then they found that this is just a buccal diverticulum and it has no resemblance to a notochord. So now they have grouped it under hemichordates, जिसमें tongue और acorn worms आते हैं. So you'll find that these are worm-like marine animals with organ system level of organization. Body bilaterally symmetrical है, triploblastic है, coelomate है. अब इनकी जो body है, coming to the unique features, 3 parts में divide होते हैं. एक आगे की ओर proboscis है, एक collar है और एक trunk है. Circulatory system you're going to find will be the open type. खाली annelids हमने बोला था closed type है. Respiration will occur through gills, so pharynx is perforated and it has gills in it with gill cliffs. Excretory organ is the proboscis gland. Sexes are separate, fertilization external and development is indirect. So they are given you 2 examples of this group. One is balanoglossus and the other is saccoglossus. So this is a figure of balanoglossus. हमने बोला था कि body 3 parts में divide होती है, पहले proboscis, दूसरा collar और ये सारा पूरा क्या है, trunk. Proboscis you'll find muscular है, ciliated है and used for locomotion. Trunk में nervous tissue is concentrated here और वो nervous tissue will be linked to epidermis में, that means outer layer में nerve fibers होंगे, उसमें उसके साथ link होगा, वो collar में है. Trunk region में will be the pharynx में present है जो perforated होगा with gill slits. Genital region है, gonads है यहाँ पे and it's going to open out by the anus. So this is the features of a balanoglossus. So with that we have finished the invertebrates or the non-chordates. Next video will be on chordates, that is the vertebrates having a notochord or a vertebral column. Thank you. God bless you all.